stoke political controversy in the Union Territory itself. The government order goes on to say that it is hereby ordered in the modification of the Jammu and Kashmir Police Medal Scheme that Sher-i-Kashmir Sheikh Abdullah embossed on one side of the medal shall be replaced by the Indian national emblem of the Government of India, and the other side inscribed with Jammu and Kashmir state emblem shall be inscribed as Jammu and Kashmir Police Medal for gallantry and Jammu and Kashmir Police Medal for meritorious service in the case of gallantry, meritorious medal at the case Navy. Also, what is being said that it is important to mention that earlier in January 2020 itself, the Jammu and Kashmir administration had changed the nomenclature of the police medal for gallantry and police medal for meritorious service by dropping the word Sher-i-Kashmir from the title of the awards itself. Now, as we go across to our reporters who will be joining us shortly to give us the details exactly, Ishan, the reference that was earlier given to the National Conference founder, Sheikh Abdullah, any reactions that you're picking up from the NC side, because it has now been decided to drop the title from the Police Gallantry Award medals? Well, yes, National Conference says that with due respect to the national emblem, this move they see as a move to erase the name of Sheikh Abdullah from the history, and they say that any such move will be dealt severely because Sheikh Abdullah, according to the National Conference, he was not only the founder of National Conference, remember, but he was also part of the several moves and decisions that the J&K took when it was a princely state, erstwhile princely state, and then he went on to become the first Prime Minister of Jammu and Kashmir back in the history. But ever since then, there are certain changes that the government has been doing, and the political party, regional political parties particularly, have been seeing it as one of those factors wherein the BJP wants to change the history of Jammu and Kashmir. But the National Conference says that any such move will not erase the name of Sheikh Abdullah from Kashmir Valley. They say that Sheikh Abdullah has had an historical impact on Jammu and Kashmir when it comes to even a Sheikh in record. कविंदर गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं. सर, अगर ये डिसीजन आज के दिन में लिया गया है, पहले तो सवाल उठता है कि उसी वक्त क्यों नहीं लिया गया जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, और दूसरी तरफ ये आरोप लगाया जा रहा है कि शेख अब्दुल्ला की जो लेगेसी है उसे मिटाने की कोशिश करी है जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन. देखिए, ऐसा नहीं है. हमने 1953 में भी एजिटेशन की थी, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान. उस वक्त जो वो सेल्फ स्टाइल सो कॉल्ड प्रधानमंत्री को हटाया गया था, उसको जेल में डाला गया था. ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी. धारा 370 के जो हमारा एक मुद्दा था, हमने उसको खत्म किया. और अब एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, उसी को सामने करते हुए कि जो व्यक्ति कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, उसी के नाम से यहाँ के पुलिस का मेडल दिया जाए. अब ये सराहनीय कदम है, स्वागत योग्य कदम है. पहले की सरकारों ने ऐसा नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो किया गया निर्णय है, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है. मुझे लगता है कि इसी कारण से जिनकी मानसिकता थी कि देश को, जम्मू कश्मीर को देश से अलग करना, उस मानसिकता को खत्म किया गया. आज पाकिस्तान परस्त लोगों को एक करारा ये उनके मुंह पर तमाचा है. ये जो एम्बलम चेंज किया है पुलिस मेडल का, और अशोक चक्र जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, उसको लगाया गया है. जी, कविंदर गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. मिस्टर माजिद मेमन सर, गुड मॉर्निंग. व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू एज फार एज रिमूवल, रादर इफ वी टॉक अबाउट पुटिंग द नेशनल एम्बलम व्हेन इट कम्स टू कश्मीर गैलेंट्री अवार्ड मेडल्स टू द पुलिस दैट शुड बी गिवन देयर, सर? डू यू आल्सो ऑब्जेक्ट टू द सेम? The anxiety is that changing the names in gallantry awards should get priority over other important problems in the valley. Jammu and Kashmir is now governed by the BJP administration. I think they have expertise in changing names of places, and I think that is the highest priority for the people to get their issues or problems solved. Kashmir is otherwise also burning, and as far as Sheikh Abdullah is concerned, he was known for ages
Right. as Sher-i-Kashmir. Right, and sir. what was the problem for the government to... But sir, we are talking about the national emblem of India that is being embossed, sir. Should there really be any opposition to that? Mr. Majud Mehman, thank you very much for your point of view. Dr. S.P. Vaid is also with us on the phone line. Sir, what is your point of view? Because we are talking about the meritorious service that the police, who has been giving their unending services to the valley, sir, they should be identified with the government of India. See, national emblem and national flag are always a very pride of every soldier, every policeman in the country. And having national emblem on the medal is a proud moment for the J&K Police. And I think the gallant action and the sacrifice, supreme sacrifice is paid by policemen and the other security forces personnel for the sake of the country, for the sake of nation, and not any particular individual, however tall personality that one may be. So that is my view. I think having national emblem on the medal is a proud moment. Absolutely, because Dr. Vaid, do you believe that it should have been done long back? Because as far as it is just the legacy that the opposition, the NC, now seems to be claiming, that is now in a way to delete or to erase. That is a deliberate move that is being seen. How do you view that, sir? I would not like to make political comments, but I'm telling the sentiment of a policeman. So that is what I feel as a policeman. Right, sir. Thank you very much, Dr. Vaid, for joining us here on the broadcast. Nirmal Singh जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं. निर्मल सिंह जी, क्या आपको लगता है कि ये पहले ही कदम उठा लेना चाहिए था, क्योंकि अब सीधे तौर पे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद हम अगर देख रहे हैं कि गैलेंट्री अवार्ड जो हमारी पुलिस फोर्स सेना को अगर दिया जाता है, उस पे कम से कम एम्बलम ऑफ इंडिया, जो पहचान है इंडिया की, वो होनी चाहिए. देखिए, ये जो कदम लिया गया है, हम इसका स्वागत करते हैं. और देखिए, कितनी जो है मजाक है सिस्टम के साथ कि वो व्यक्ति जो कि एक अलगाववाद और उग्रवाद उनकी आइडियोलॉजी के कारण यहां पर वो कंट्रीब्यूटरी फैक्टर था, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर था. जो व्यक्ति जिसकी सोच, जो पार्टी अलगाववाद की और उसका ऑटोनॉमी की बात करती थी, प्री 53 की बात करती थी, और यहां तक के पाकिस्तान वगैरह किस प्रकार से हॉबनॉबिंग हो रही थी, एंड ही वाज अरेस्टेड फॉर नंबर ऑफ टाइम्स, एंड ही जब वो पावर में आ गए तो उसी व्यक्ति के जो है नाम पर जो है मेडल जो किया गया, शुरू किया गया, और किनको दिया गया? जो इस प्रकार की सोच से, जो उग्रवाद था, अलगाववाद था, उससे फाइट कर रहे थे और कुर्बानियां दे रहे थे. चाहे उनको जो है लाइव उनको जो गैलेंट्री मिलता था, चाहे उनको पॉस्टमसली मिलता था, लेकिन उसी व्यक्ति का फोटो लगाया जाता था. लेकिन निर्मल सिंह जी, एनसी का सीधे तौर पे ये कहना है कि अगर हम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बात करें तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है कश्मीर का एक्सेशन के लिए 1947 में, और इसलिए उनकी पहचान एक तरीके से शेर-ए-कश्मीर हो गई थी. मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, ये इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता. जबरदस्ती शेख अब्दुल्ला का जो रोल था, शेख अब्दुल्ला साहब का, वो नेहरू जी ने बनाया था. ये सोल जो कहना चाहिए जो प्रेरोगेटिव था, दैट वाज ऑफ द महाराजा, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाज सेम फॉर ऑल द स्टेट, 562 स्टेट, एंड महाराजा हरि सिंह वाज द ओनली अथॉरिटी व्हिच कुड who was authorized to sign that, and ultimately integrating the state of Jammu and Kashmir to Indian Union. Right, it was sir. Otherwise, by involving Sheikh Abdullah, Jawaharlal Nehru and Congress, that kept Jammu and Kashmir away from the Indian Union. Right, sir. The blunder which had been corrected on 5th August 2019. Right, sir, because there is a lot of history being attached, and that is why the NC is claiming that this is an attempt to erase the legacy of Sheikh Mohammed Abdullah, though, however, we are looking at many who are also welcoming the step by the Jammu and Kashmir administration. Nirmal Singh ji, thank you very much for joining us here on the broadcast. Let's